Assalamualaikum, Abbas is here. In this video, I am going to explain the article 1.6 screw gauge of class 8 subject physics. Article 1.6 is screw gauge. Screw gauge is an instrument that is used to measure small lengths with a accuracy greater than a vernier caliper. Last time हमने देखा था कि वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं। स्क्रू गेज भी हमारे पास एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं, लेकिन स्क्रू गेज की एक्यूरेसी वर्नियर स्केल की एक्यूरेसी से ज़्यादा होती है। हमने देखा था कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 मिलीमीटर था, जबकि स्क्रू गेज का हमारे पास लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। इट मीन्स दैट it is 10 times more accurate than vernier caliper. So screw gauge has also its two main parts, which is circular scale and main scale. The main centered line is called index line. Here we see least count of screw gauge. We already discussed the formula for least count, which was smallest division on main scale divided by number of divisions on circular scale. Now we see that smallest division on main scale is 1 millimeter. Number of divisions on circular scale are 100 for screw gauge. स्क्रू गेज में हमारे पास जो सर्कुलर स्केल होता है उस पर जो डिवीजन्स होती हैं वो 100 होती हैं हमारे पास. सो लिस्ट काउंट विल equal to 0.01 millimeter or 0.001 centimeter. Here we will see how we can calculate the length by using screw gauge. The formula for the measuring is observed value is equal to reading on main scale plus reading on circular scale. Now reading on main scale, in last picture we can see that the reading on main scale is here is 0, 5, 10 and it's the 15th division. So the here we can see it's 1 for 5, then 10 and it will be 15th. So the reading on main scale is 15 millimeter. Now the line which is coinciding with the index line, the line of screw scale is 30-second. It is 30-second line. So number of coinciding line with index line is 32. So reading on circular scale is 32 multiplied by 0.01 millimeter, which will be equal to 0.32 millimeter. हमने लास्ट टाइम भी देखा था वर्नियर कैलिपर के केस में, और अब यहाँ पे स्क्रू गेज के केस में भी हम देख रहे हैं कि हमने अगर लेना हो रीडिंग सर्कुलर स्केल की तो उसमें हमारे पास फार्मूला क्या होता है. उसमें हमारे पास फार्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग लाइन विद इंडेक्स लाइन, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से. तो वो मेरे पास 0.32 मिलीमीटर आ गया है. तो अब हमारे पास वैल्यू जो होगी लेंथ की वो क्या होगी, रीडिंग ऑन मेन स्केल प्लस रीडिंग ऑन सर्कुलर स्केल, विच विल बी इक्वल टू 15.32 millimeter or 1.532 centimeter. This calculation is for the instrument which have no zero error. Now zero error, as we have talked in last video, that zero error can be defined as when the zero of मेन स्केल डज नॉट मैच विद द ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल. तो अगर आपके पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के जो इंडेक्स लाइन है उससे मैच ना कर रहा हो तो देर विल बी सम ज़ीरो एरर इन स्क्रू गेज. एंड वी नो दैट ज़ीरो एरर हैज़ टू टाइप्स, पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर.
Zero error is positive if zero of circular scale does not reach the zero of main scale. When we are closing our screw gauge and we see that the zero of circular scale does not reach to the main scale, then that will be positive zero error, as you can see in this picture here. And for negative zero error, if the zero error is negative if zero of circular scale has passed zero of main scale or passed index of main scale. अगर हम देखते हैं कि ज़ीरो जो है वो हम पास कर चुका है, मेन स्केल पे जो ज़ीरो है उसको हमारे सर्कुलर स्केल ने पास कर लिया है, तो देयर विल बी नेगेटिव ज़ीरो एरर. नाउ कैलकुलेशन फॉर पॉजिटिव ज़ीरो एरर. To find the positive zero error, we have to here we have to note the coinciding line. We have to point out the coinciding line with the index line, which will be for this picture is 18th line. So zero error is 18 multiplied by 0.01 millimeter. As the zero error is positive, so it will be positive 0.18 millimeter, and zero error correction is minus 0.18 millimeter. ज़ीरो एरर का फॉर्मूला, ज़ीरो एरर करेक्शन क्या होता है, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो मैंने काफ़ी डिटेल से वर्नियर कैलिपर जो आर्टिकल है उसमें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं. Now calculation for negative zero error, number of coinciding line with index line. Here we can see in this picture it is 95. So zero error for negative zero error is the formula for negative zero error is number of divisions on screw scale minus number of coinciding line with index line multiplied by least count. As we know that number of divisions on screw scale are 100 minus 95 multiplied by 0.01. So the zero error here, the negative zero error is negative 0.05 millimeter, and zero error correction is positive 0.05 millimeter. And if there is some zero error in our instrument, so we have to uh, add zero error correction in the value. Thank you for watching.